Hello students, today we are going to discuss the very important question of 12th class chemistry physics ਦਾ। जिस तरह सबनों पता कि कल फिजिक्स का पेपर है, सो 5 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की गल करांगे आपां। सब तो पहले 5 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह डिफाइन इलैक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट एक्सियल एंड पॉइंट एंड राइट द रिलेशन फॉर ई इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द state dipole and what is the angle between E and P on the axial line. Second one, define neutral axis and find electric field intensity at any point on the equatorial line. ठीक है जी। सो ये एक्सियल ਤੇ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, find the relation of for the torque on electric dipole when it is placed in uniform electric field. Next है define Gauss's theorem and find the relation for electric field intensity due to the charge rod. ठीक है। नेक्स्ट है define electric flux and find the relation between the electric field intensity E due to the charge thin sheet and what will be its value in the side if the sheet is thick. ठीक है। and next question is define Gauss's surface and find the relation for the electric field intensity E charge hollow conducting shell inside outside or on the surface. ठीक है। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन इन्हों के डेफिनेटली और ऑप्शन के भी क्वेश्चन जरूर होंगे है। सो इन्हों बहुत चंगी तरह तैयार किया जाए। नैक्सट क्वेश्चन है डिफाइन इलैक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइंड द रिलेशन फॉर इट ड्यू टू द टू चार्जेस। नेक्स्ट है डिफाइन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फाइंड द रिलेशन फॉर इट ड्यू टू द मोनोपोल एंड ड्रा द ग्राफ। Next है define electric dipole moment, find the relation for the electric potential at any point due to the electric field and write the relation it for the axial and equatorial line. Next है n number of capacitors are connected in parallel and series and find the relationship of the capacitance of these capacitors. Next, what is the principle of capacitor? Next find the relation for the energy stored in capacitor. Next define capacitance of a parallel plate capacitor and derive the expression for it. Next what will be happen falling for the dielectric slab is introduced. ठीक है। सो ये इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कुछ रिलेशनशिप्स जो तुहानूं इत्थे दिखाए जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार पूछे जाते हैं। एट एनी पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वेटोरियल सरफेस है, रिलेशनशिप बिटवीन द इलैक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप है, एनर्जी ऑफ ए डाइपोल रिलेशनशिप है, सीरीज पैरेलल कैपेसिटेंस का रिलेशनशिप है, पोटेंशियल एनर्जी एट सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है एंड पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर दे। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, draw electric field lines for the q charge greater than 0 or less than 0, find the angle between direction of dipole moment electric field on axial line of dipole and equatorial line of dipole. These are the most important question. Next question, why no work is done moving a charge from one point to another on equatorial surface, and why two electric lines of force never intersect each other. And next that is calculate the force between a proton and electron separated by distance, and how many electrons are present in 1 coulomb of charge, what is the dimension formula of 1/4 pi epsilon naught, and what are the two basic properties of charge. So next है साढ़े कोल a dipole moment P is present in a uniform electric field E with an angle of P and E. Torque experienced by dipole is minimum. Expression of the show करना, difference between dielectric and conductor, and draw equipotential surface for a point charge and line charge, and give two example of a conservative electric field. What do you mean by conservative field? Why electric field is always perpendicular to equipotential surface, and what do you mean by the electrostatic shielding, and how many electrons are present in kilogram. What do you mean by electric dipole and dipole moment? Name the physical quantity whose unit is joule per coulomb, whether it is a scalar or vector quantity. ठीक है। What is electric flux, SI units, and what are the value of charge inside a cube with a flux of
700 web and flux output of 200 web. Next है what is the electrostatic potential due to electric field at any equatorial point, and define electric potential difference between the 2 points of electric field. Define an equipotential surface. Define potential energy of a charge at a distance q and a distance r, and sketch two equipotential surface point charges and an electric dipole. Next, no two equipotential surfaces intersect each other. Draw equipotential surface. Next, define electric void. ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਅਗਰ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ए ਸਸਟੇਨ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਪੈਟਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर फ्रिंज एंड जंक्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट डिस्कस द फुली फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन स्लिट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। स्टेट ब्रेथस्ट्रो लॉ and using this law prove that the polarizing angle of incidence and reflected and transmitted rays are perpendicular to each other. Next question है describe briefly with the help of suitable diagram how the transverse nature of a light can be demonstrated by the phenomena of polarization. Next, what is the when unpolarized light passes through air to the transparent medium, under what condition does the reflected light get polarized? And next, ray optics drive in a relationship for the focal length of a double convex lens and a radius of curvature. Next, what is the total internal reflection? What are the necessary conditions for total internal reflection? And obtain a relationship. Next, with the help of diagram working of a compound microscope and with the expression of its magnifying power calculate करनी. Draw a course of rays in case of astronomical refracting telescope and final image at a distance of distant vision second, final image at infinity. Obtain करेंगे the expression. Next, write the assumption and sign convention and then drive the mirror formula. ठीक है। Next, assumption sign convention drive the mirror formula for convex mirror, पहले से concave mirror। ठीक है जी। Next, using the relationship distance of image, radius of curvature and convex spherical surface when refraction takes from optically rare to the optical denser medium, and derive the expression that is a mu1 over u plus mu2 over v equal to mu2 minus mu1 over r, that is a refraction occur from rarer to the denser medium। ਸੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਕੁਛ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਮ ਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੀਅਲ ਜਾਂ ਇਕੁਟੋਰੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਟੋਰਕ ਦੀ ਗੌਸਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਡਿਊ ਟੂ ਰੋਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कैपेसिटेंस है प्लेट्स पैरेलल ਜਾਂ सीरीज़ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कैपेसिटेंस ਦੀ। ठीक है जी। रिलेशनशिप बिटवीन इलैक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। करंट इलैक्ट्रिसिटी चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो ओहम ला, सीरीज़ एंड पैरेलल कंबीनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन वेज है। पोटेंशियोमीटर है, यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर है, यूज़ ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, फोर्स करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लाइनस की गल करते हैं आप। साइक्लोट्रॉन है, ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਸੈਵਰਟ ਲਾ ਹੈ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट एंड करंट वायर है। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ करंट लूप की गल करते हैं आप। एम्पीयर सर्कुलर ला कह दें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दें। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की गल करते हैं। मूविंग कॉइल गलवेनोमीटर जोड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है करते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट गलवेनोमीटर इनटू एममीटर एंड वोल्टमीटर, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मीटर की गल करते हैं। फोर्स एंड टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन की गल करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, मैग्नेटिक ससैप्टेबिलिटी है। रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससैप्टेबिलिटी की गल करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटीरियल की गल करते हैं। नैक्सट चैप्टर गल करते हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। फैराडे लॉ है,
EMF ਮੋਸ਼ਨਲ EMF ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਹੈ, ਐਡੀ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਵਰੇਜ ਐਂਡ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਆਫ AC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਵੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ RLC ਸਰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। AC ਸਰਕਟ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਇਨ ਏ ਸੀਰੀਜ਼ RLC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਜ਼ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਟਰ ਵੇਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀ ਆਪਟਿਕਸ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਅਪ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 5 ਮਾਰਕਸ ਕੈਰਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ऑन द स्क्रीन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यंग्स सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लॉज ऑफ ब्रेवस्टर लॉ है। नैक्सट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ये फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी थ्रैशोल्ड एनर्जी की गल करते। फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट अगेन इंपोर्टेंट, डी ब्रोग रिलेशनशिप है, आइंस्टाइन रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है एटम है, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियाई एंड वेलोसिटी है। अल्फा बीटा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोहर मॉडल है। हाइडन स्पैक्ट्रम है। न्यूक्लियर की गल करिए तो ये लाज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके है। मास इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी न्यूमैरिकल है। रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ डिके कॉन्सटेंट है। न्यूक्लियर फिशन तो फ्यूजन की गल करते हैं। तो लास्ट विच इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस सैमी कंडक्टर है, जिन्हों VI डायोड है, एनर्जी है, जिनर डायोड है, फोटो डायोड की गल करते हैं। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एक्सपैक्टेड 5 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स कैरिंग क्वेश्चन दे दिते। उन्होंने टॉपिक जिहड़े डिस्कस किए इन्हां दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करो। सो ऑल दी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड गेट गुड मार्क्स। थैंक यू।